अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपना नया दिन बेहतरीन अंदाज में गुजार रहे होंगे। मैं हाजिर हूँ एक नए दिन के साथ और एक नए व्लॉग के साथ। आज 4 जुलाई है, यानी अमेरिका का यौम आज़ादी, इंडिपेंडेंस डे, और साथ ही साथ मुहर्रम का 9th डे है, यानी 9वां मुहर्रम है आज। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी साल तक हमेशा 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा। जब सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये दिन तो यहूद नसारा भी अज़मत के तौर पर मनाते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं आइंदा साल ज़िंदा रहा तो मैं 9वीं मुहर्रम का रोज़ा भी रखूँगा। और ये भी फरमाया कि यौम आशूरा के रोज़े से मुझे उम्मीद है कि ये गुज़श्ता साल के गुनाहों का कफ़ारा बनेगा। तो हमें चाहिए कि हम इन दोनों दिन में रोज़ा रखें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें। और यहाँ मैं बच्चों के लिए फ्राइज़, फ़िश नगेट्स वग़ैरह बना रही हूँ। खाना बनने में टाइम था तो मैंने सोचा कि उनके लिए बना लूँ। और यहाँ मैं ये कीमे के समोसे अपने लिए निकाले थे, ये मैंने फ्रीज़ करके रख देती हूँ एक साथ ही, तो फिर कभी कभार बना लेती हूँ शाम की चाय के साथ। तो ये मैंने अपने लिए निकाले थे 2 समोसे अफ्तारी के लिए। बच्चों के लिए जो फ्राइज़ वग़ैरह तो मैंने बनाए थे ना, उसमें मैं ऑयल स्प्रे नहीं करती, लेकिन अपने लिए जो ये घर के जो समोसे होते हैं ना, तो इसमें हमने कुछ ऑयल वगैरह डाला नहीं होता, तो इसमें हम फिर मुझे ऑयल स्प्रे करना पड़ता है। तो ये था बच्चों की प्लेट्स रेडी हो गई थी, तो ये उनके लिए मैंने निकाले थे नगेट्स। एक बच्चा फ्राइज़ खाता है, एक बच्चा नहीं खाता, एक बच्चा नगेट्स खाता है, एक बच्चा नहीं खाता। तो ये दोनों उनकी प्लेट्स हैं, और ये मेरे समोसे अफ्तारी के लिए मैंने पहले ही बना के रख दिए थे, ताकि बाद में, क्योंकि हमें जाना था आज फायरवर्क्स के लिए, तो मैंने पहले ही बना के रख दिए थे। और ये मैं गोश्त भून रही हूँ, मटन का है ये, बोनलेस मटन है, तो ये मैं कौरमा बना रही थी। बच्चे शौक़ से तो नहीं खाते, लेकिन मैंने सोचा इसमें थोड़ी सी ग्रेवी वगैरह रख कर तो उन्हें दही वगैरह के साथ दे दूँगी। तो छोटे बेटे ने फिर भी नहीं खाया, उसने तो चावल के साथ दही और दही और चीनी डाल के खा ली थी उसने। बड़े बेटे ने तो खा लिया था रोटी के साथ, वो थोड़ा थोड़ा ग्रेवी और दही के साथ खा लिया था। और ये कौरमा रेडी है। धनिया की कमी है, धनिया नहीं था घर में, तो बस ये फाइनल लुक थी। और यहाँ ये मेरे हस्बैंड अपनी जॉब से लेके आए थे कुछ, एक फ़ैन सा छोटा सा, कि बस इसको लगा देंगे। इसमें आईफोन और एंड्रॉयड का चार्जर लगा है, वो जब फ़ोन में लगाएंगे तो ये फ़ैन चलना शुरू हो जाएगा। और ये यानी कि हवा के लिए, इतनी ज़्यादा तेज़ हवा नहीं थी, लेकिन मतलब वैसे ही बच्चों के लिए शायद बनाया है। Okay, gadgets. You guys like gadgets? Look, how do you look? Oh, if I do this way, this issue. Just because the connection is too hard to get to. Okay, hold on. और साथ में मिनी फायरवर्क्स लेके आए थे, छोटे छोटे पटाखे लेके आए थे, और बच्चों ने घर में गंद मचा दिया था। ये फायरवर्क्स का छोटे छोटे पटाखों से घर में गंद कर दिया था। और ये मैं ट्राई कर रही थी फ़ैन चला के अपने फ़ोन में, तो सही चल रहा था। फिर मगरिब की नमाज़ के बाद ही हमें घर से निकलना था, तो ये मैं अफ्तारी कर रही थी जल्दी से। तो ये मेरे बस एक मेरा दूध का गिलास था, जिसमें मैंने रूह अफ़ज़ा डाल के बना लिया था, खजूर, ये जल्दी से मैंने खा के नमाज़ पढ़ ली थी। फिर रास्ते में मैंने अपने लिए खाना ले लिया था। गाड़ी में मैं बैठ के मैंने फिर चावल थे मेरे कल के पड़े थे, वो मैंने खाए, और साथ ही मेरी चाय अपनी रख ली थी। लेकिन जब तक मैंने खाना खा लिया तो चाय मेरी ठंडी हो चुकी थी, तो मुझे चाय का मज़ा नहीं आया। चाय तो गर्म ही अच्छी लगती है, लेकिन बस वो रात का टाइम था, फिर हमें थोड़ा सा लेट हो जाता, तो मैंने सोचा चाय मैं रास्ते में ही पी लूँ, तो इसलिए मैं चाय साथ ले गई थी। और ये अब हम जा रहे थे, ये गुज़र रहे थे रास्ते से, तो यहाँ पे डाउनटाउन से गुज़र रहे थे हम। ये ब्रिज है हमारा कैंसस सिटी का, और फिर साथ ही आगे डाउनटाउन है, ये डाउनटाउन है, और ये साथ में इसका रिवर लगता है, ये रिवर है। और ये जो साथ में जो बहुत लाइट नज़र आ रही है, ये स्टेडियम है।
यहाँ पे फीमेल का सॉकर स्टेडियम है, CPKC स्टेडियम। यहाँ पे फीमेल औरतें यानी खेलती हैं यहाँ पर। और ये डाउनटाउन का मंज़र है। तो हमारे साथ आप भी देखिए, हमने फायरवर्क्स हमने इंजॉय किए, तो आप भी इंजॉय करें। और पहले ये सारा मंज़र देखें, बहुत खूबसूरत लगा था। सूरज गुरूब हो रहा था क्योंकि मगरिब का टाइम हो चुका था, तो सूरज आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा था। और ये डाउनटाउन है, और डाउनटाउन में ही फायरवर्क्स होने थे। और वहीं पर गैराज था, यानी हमने अपनी वहाँ पे गाड़ी पार्क की। सबसे ऊपर बिल्डिंग, सबसे टॉप पर हम थे, और वहाँ से फिर फायरवर्क्स हमने देखे थे। You see that straight? You missed it. This is, but then we realized it's such a hassle. Just What? how do you look at the left side building? Look. This Is is, it 4 minutes away? yeah. Look straight ahead on top of the building. So you're gonna see so many Hey, fireworks. I see. Do you see? Yeah, that's how we know this area gets more crazy. They're gonna watch all this stuff from here. Everybody's gonna watch the fireworks from here. Look, Hadi, on the left. Look, Hadi, look on the left. Hadi, look on the left. Bhai, look on the left. Look, everybody. West Flushing Road, then turn left onto Broadway Street, Honorary Archives Way. Not 1 minute. Come here, I want to. Look, you can see. Come on, honey. Look, there's a helicopter. Yeah. It's not tailbox. It's not tailgate seats. Yeah, chill. And you can put this too, bro. What's this? Oh my gosh! That is so How do you like it? Yeah, it's so It's fun. Look at that. That's Okay, awesome. sit back. No. Oh my god, Hey, look. Oh my god. There's giant. It's cool. Look at the
pretty fun. And they actually took it right there. Yeah, but that one's way better. They're being even crazy. I am. Look at that. They're shooting. What time is the fire gonna be done? Wait, the car. Don't the car. The fire, just watch, keep watching the fireworks and just don't miss it. Wait, the fireworks, would it be fire shower? Yep. So, last 5 minutes they're doing. Having fun, guys? Yeah, it's so much fun. I love the music. I like the shower. This shower, this one is
fireworks because it's right under the. Yeah, I already know that. It's slow going to the ground. It's gonna be smoke everywhere on the highway when we go. Everywhere. Right now? Right now.
ये मछली बना रही है जो जा रहा है। बस है पुलिस वाला सबको निकलो, यहाँ से निकलो। पुलिस ये रात को सोने से पहले मैं लस्सी बना रही थी, क्योंकि जब रोज़ा रखना होता है मैं उससे पहले मैं लस्सी बना के पीती हूँ। ये दही में बस नमक डाल लें या चीनी डाल लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो दही में पानी डालकर नमक डालकर, मैं नमक डालती हूँ, तो उसको बस पतली सी लस्सी बना लें और पी लें, तो आपको अगले दिन प्यास नहीं लगती, यानी रोज़े में प्यास नहीं लगेगी। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।